We are waiting for the few more participants to join. We'll start at the webinar in the next 2 minutes. Am I audible, Yashvi? Yes, you are audible. Okay, so good afternoon, everyone, and welcome to our investor webinar. Thank you for taking the time to join us today. The recently announced union budget comes at a time when the market are navigating a mix of opportunities and uncertainties. In today's session, we aim to decode the key takeaways and discuss the market outlook going forward. We have our fund manager, Mr. Kartik Mehta, with us today, who will share his insights on the budget, the macro environment, and the investment approach. We will be the session. The session will be followed by the question and answer session. And over to you, sir. Thank you, Abhay. Good evening, everyone. Let me just share the screen. So I'm assuming this screen is visible to you all. Yeah, it's visible, sir. Okay, thank you. तो फ्रेंड्स, जो कल का जो बजट आया था और नेचुरली बजट के खत्म होने के बाद जो मार्केट का नी जर्क रिएक्शन आया
वो देख के काफ़ी आप लोगों के मन में क्वेश्चंस आए होंगे कि मार्केट ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया और बजट में ऐसा क्या आया है फाइन प्रिंट में। सो अभी जो कल का जो नीजक रिएक्शन था वो ख़त्म हो गया, आज मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया है। सो बजट इवेंट इज़ ओवर। फिर भी हम डिटेल में बजट के ऊपर बात करेंगे और उसके क्या इम्प्लीकेशंस आने वाले हैं आने वाले समय में, उसके ऊपर बात करेंगे। सो पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे आपके लिए। जो एवरी ईयर हमको सुनते हैं उनको ये इजी होगा समझने के लिए, जो नए मेंबर्स है उसके लिए भी ये क्वाइट कन्वीनियंट होगा। जैसे आप देख सकते हो सेंटर में गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू होता है। वो टैक्स दो साइड से आता है, एक डायरेक्ट टैक्स जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स रेट एंड इनकम टैक्स रेट होता है, और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें जीएसटी कस्टम एक्साइज वगैरह होता है। अभी जो हमारी जो टोटल जो टैक्स कलेक्शन है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 years, इट हैज टिल्टेड मोर इन फेवर ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सो अभी एज ऑफ नाउ अराउंड 60 to 61% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्शन is coming from direct tax, and around 40% or 41% of the tax collection is coming through indirect tax. Within direct tax also, the pie of income tax, personal income tax is growing faster than the corporate income tax, corporate tax, because government ने वहाँ पे tax cut किया था. So the fastest and the best growing and highest contributing element is income tax, followed by corporate tax. That gives you a direct tax collection, and in indirect tax it is GST, custom and excise. अभी ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हमारी टोटल टैक्स रेवेन्यू होती है, उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू ऐड हो जाती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे आरबीआई का जो डिविडेंड या बोनस ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट को, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट्स जो मैंने नीचे लिखा है अलग से, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर नॉन टैक्स रेवेन्यू। या फिर एजीआर जो, या तो फिर टेलीकॉम से जो स्पेक्ट्रम की फीस वगैरह आती है। सो ऑल दिस थिंग्स, इंटरेस्ट इनकम, ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ माय नॉन टैक्स रेवेन्यू। बट जनरली क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू लंपी होता है, मतलब एक आध दो साल में बहुत बड़ा डिस इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो ये फिगर बढ़ जाता है। बट यू कांट टेक इट एज इफ इट इज गोइंग टू कम टू यू कंसिस्टेंटली एवरी ईयर। सो उसका ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करके मेजर हमको टैक्स रेवेन्यू पे ही फोकस फोकस करना है, उसमें भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को सेपरेटली एनालाइज करना होता है। अ, अभी वो टोटल रेवेन्यू होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मिला के टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू डिसइन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं तो टोटल रिसीट होती है। टोटल रिसीट में से एक्सपेंडिचर माइनस होता है। वो टोटल एक्सपेंडिचर अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज योर capital expenditure, which is on the left hand side, which is small part of the total expenditure, जिसमें गवर्नमेंट कैपेक्स के ऊपर कैपेक्स करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है इन क्रिटिकल एरियाज लाइक डिफेंस, रेलवे, रोड्स, हाउसिंग, अर्बन इंफ्रा, सो एंड सो फोर्थ। एंड जो राइट साइड में आपका जो एक्सपेंडिचर कहलाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसमें वो पैसा इंटरेस्ट के पीछे जाता है, सब्सिडीज के पीछे जाता है, वेलफेयर स्कीम्स के पीछे जाता है, सोशियो इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के पीछे जाता है। तो अल्टीमेटली ये दोनों एक्सपेंसेस नेसेसरी है, लेकिन द पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इन ओवरऑल पाई ऑफ द पाई ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन टोटल एक्सपेंडिचर शुड इंक्रीज एवरी ईयर, दैट शुड बी द एंडेवर, और ये गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम कर रही है। सो बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी में मल्टीप्लाई इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप 1 रुपया खर्च करते हो तो उससे 4 to 5 टाइम्स आपका मनी मनी सर्कुलेशन होता है, जॉब क्रिएट होती है और अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। तो जीडीपी को जो पुश मिलता है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से सबसे ज्यादा मिलता है। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है ना, वो श्योर शॉट होता है, लेकिन जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे कॉरपोरेट्स करते हैं या इंडिविजुअल्स करते हैं, तो उसकी जो स्केल एंड साइज है वो कम है। और दूसरा वहां पे श्योरिटी और ग्रोथ नहीं है, मतलब कोई कोई साल प्राइवेट कैपेक्स एक दो साल आता है फिर रुक जाता है। सो but capital expenditure from the center and state is like, they allocate the fund and usually they follow the practice of spending it with some deviation. अभी ये दोनों एक्सपेंडिचर का टोटल है टोटल एक्सपेंडिचर। नाउ टोटल रिसिट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर विल गिव यू डेफिसिट, बिकॉज यूजुअली हमारा एक्सपेंस इनकम से ज्यादा होता है, तो उसको उसको बोलते हैं क्रॉस फिस्कल डेफिसिट। अभी वो डेफिसिट को मैच करने के लिए दे गो फॉर अ बोरोइंग।
और वो बोरोइंग का जो नंबर आता है वो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग के नाम से जाना जाता है, जो बजट में आप सुनते हो। और ग्रॉस मार्केट बोरोइंग में से गवर्नमेंट मतलब टोटल रुपया मार्केट से कितना बोरो करेगा, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को रीपेमेंट भी करना होता है, तो उसके बाद आता है नेट मार्केट बोरोइंग। तो कई बार क्या होता है, हम मिसलीड हो जाते हैं कि नेट मार्केट बोरोइंग का नंबर वाई ओ वाई फ्लैट है या मार्जिनल बढ़ा है बिकॉज रीपेमेंट ज्यादा है, लेकिन ग्रॉस मार्केट बोरोइंग का नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उतना पैसा सिस्टम से निकलेगा। सो शक होगा। तो ये इस तरह से आपका टोटल बजट का सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है। अभी यही चीज हम डिटेल में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला कंपोनेंट जो ये डायरेक्ट टैक्स का था, वही मैं इधर दिखाने जा रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 इयर्स। सो 23, 24, 25, 26, 27 बजट। सो अभी 26 आ रही मतलब रिवाइज एस्टिमेट। सो व्हाट डज इट मीन, एंड 27 बी मतलब बजट एस्टिमेट, बजटेड एस्टिमेट। तो अभी FY 27 का गवर्नमेंट ने बजट किया है। अभी जरूरी नहीं है कि जितना बजट करते हो उतना ही आप स्पेंड करते हो, उससे ज्यादा या कम करते हो। तो फाइनली जब आप क्लोजर टू द इवेंट आते हो, तब आप अपना एस्टिमेट रिवाइज करते हो कि ओके मैंने ₹100 का बजटिंग एक्सपेंस किया था या इनकम गिना था, लेकिन वो 95 हुआ या 90 हुआ या 65 हुआ, वॉट एवर। सो दैट नंबर इज कॉल्ड द रिवाइज एस्टिमेट, राइट? सो दैट इज द रियल नंबर यू हैव टू फॉलो नाउ, बिकॉज दैट इज वेरी रिलायबल। अभी ऑलरेडी हम फेब्रुआरी में है, एक ही महीना, एक डेढ़ 2 महीना बाकी है, फेब्रुआरी एंड मार्च। सो मोर और लेस गवर्नमेंट नोस कि कितना उनका हो चुका है और 1-2 महीने में कितना इनकम या एक्सपेंसेस होगा। सो बेसिकली रिवाइज एस्टिमेट इज गोइंग टू बी द टॉकिंग पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट फॉर डिराइविंग द ग्रोथ फॉर द फ्यूचर। सो ये जो नंबर है वो आपके सामने है। इट स्टार्टेड वेल, टोटल डायरेक्ट टैक्स का नंबर इन 16.7 ट्रिलियन रुपीस। वहां से बढ़ के अभी वो 27.3 है। और ये साल गवर्नमेंट ने एज्यूम किया है कि रिवाइज एस्टिमेट के ऊपर, लास्ट ईयर के FY 26 के रिवाइज एस्टिमेट के ऊपर 12% इसमें ग्रोथ आएगा। अभी देखिए हमारा नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ गवर्नमेंट ने 10% पकड़ा है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव नंबर है, स्लाइटली कंजर्वेटिव नंबर है, बिकॉज आई कैन सेंस दैट इन्फ्लेशन इज गोइंग टू कम बैक ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। सो आपका नॉमिनल जीडीपी का नंबर जो 10% है वो प्रोबेबली 10.2, 10.4% के आजू बाजू ये साल रहना चाहिए। सो जनरली जो हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है ना, उसको मिरर करते हुए ही सब कुछ चलता है, मोर और लेस। सो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ग्रोथ ऑफ 12% इज मोर और लेस प्रेडिक्टेबल एंड डुएबल नंबर। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गवर्नमेंट ने कोई एग्रेसिव एजम्पशन किया है। नाउ कमिंग टू इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज देयर फॉर यू टू लुक एट। यहाँ पे देखिए आप 23, 24, 25, देर वॉज अ बिग बॉयंसी इन द इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ग्रोथ। मतलब 13.8 से 14.9, 15.6 एंड 16.4 लास्ट ईयर। ये साल सिर्फ 2% ग्रोथ इसमें एज्यूम किया है बिकॉज गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द जीएसटी रेट्स ऑल अक्रॉस रिसेंटली, जिसका इम्पैक्ट हमको फुल ईयर बेसिस पे नेक्स्ट ईयर को दिखेगा। सो गवर्नमेंट हैज एज्यूम नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 3% फॉर जीएसटी कलेक्शन, एंड कस्टम और एक्साइज में गवर्नमेंट ने 5% एंड 16% का ग्रोथ एज्यूम किया है। सो ऑल दिस थिंग इज लीडिंग टू जस्ट 2% growth in indirect tax revenue, because GST is pretty large part of the indirect tax revenue, followed by custom and excise. नाउ नॉन टैक्स रेवेन्यू नंबर गवर्नमेंट का कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है थैंक्स टू हेफ्टी आरबीआई डिविडेंड। ये साल का नंबर फ्लैट है कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट इसके अंदर जो कंपोजिशन है उसमें सबसे बड़ा एक एलिमेंट जो ट्रिगर एंड टॉकिंग पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट, दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट। यूजुअली गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट डिसाइड करती है उसमें सब्सटेंशियली डेविएशन होता है अंडर परफॉर्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वहां पे वो अंडर अचीव ही होता है। तो जैसे FY 23 में 460 बिलियन किया, 331 किया, फिर 172, एंड दिस ईयर दे आर सेइंग 338 विल बी द रिवाइज नंबर, विच इज मच लेसर देन द what was budgeted, and they have spelled out 800 billion rupees disinvestment target for FY 27.
सो उसमें एक तो आईडीबीआई की बात चल रही है, दैट आईडीबीआई माइट बी डिसइन्वेस्टेड, एंड ऑल्सो कपल ऑफ एफपीओज शुड कम फ्रॉम द ऑलरेडी लिस्टेड एंटिटीज। सो ये नंबर अब की बार गवर्नमेंट ने बहुत एग्रेसिव प्रोजेक्ट भी किया है, एंड आई होप कि दे विल बी एबल टू अचीव दैट। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन आ सकता है, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग नंबर टू अफेक्ट द ओवरऑल मैथमेटिक्स। Now, if you look at the total receipt or combination of total tax, direct tax and indirect tax, so which is likely to grow at 7% rate to the extent of 36.5 trillion rupees on the base of 34.1 trillion rupees. So there is a decent growth. So more or less it is. So basically, direct tax is growing faster, 12%. Indirect tax will be growing at a moderate 2%. And as a result of that, your total tax receipt is likely to grow at 7%. This is pretty doable number. Now, if you look at the expenditure side, the total expenditure is likely to grow at 8% rate, which is, I think, a very decent number, I would say. And the growth in expenditure is higher than the growth in revenue, which is again a good thing. So from 41.9 trillion rupees, it is now close to 53.5. And on the base of revised estimate of FY26, the growth assumption is 8%. Now, of this total expenditure, as I said, there are two elements of the expenditure. One is revenue expenditure, another one is a capital expenditure. So now, if you look at the revenue expenditure, the growth rate again is 7%, which is lesser than the total expenditure number, which means that the capital expenditure growth will be higher than revenue expenditure, which is good because productive capex ज़्यादा होगा। अब लेट्स गो टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर। यहाँ पे आप देखिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही अच्छा ग्रोथ एजम्पशन है, 12% ऑन द रिवाइज एस्टीमेट। सो फ्रॉम 7.4 टू 9.5, 10.5 FY25, FY26 रिवाइज एस्टीमेट 10.9। सो यहाँ पे एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि 25 से 26 का जो नंबर है उसमें ग्रोथ सिर्फ 4% का है। सो बेसिकली गवर्नमेंट प्रोजेक्टेड क्लोज टू 11.2, बट दे कुड नॉट अचीव इट एंड इट इज नाउ 10.95। सो यहाँ पे ये साल गवर्नमेंट थोड़ा सा कैपेक्स जो टारगेट किया था उसको अंडर अचीव कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बेस हैज गॉन डाउन, उसके ऊपर 12% का ग्रोथ दिख रहा है। सो दैट इज वन लाइन आइटम विच मार्केट डिड नॉट लाइक yesterday, and people just thought of that market is extremely worried for STT, but that is usually not the case. We'll talk about it in the coming slides. Now, if you look at the capital expenditure number, as I said, to 12% growth, this is where I am coming. On your left hand side, if you see, 9 मंथ में गवर्नमेंट ने 15% ग्रोथ किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, लेकिन जो बजटेड नंबर है, सॉरी रिवाइज एस्टिमेट का नंबर है, उसके हिसाब से फुल ईयर का ग्रोथ 4.2% ही आ रहा है। दैट मीन्स कि ये फोर्थ क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर में, देयर हैज टू बी डी ग्रोथ इन द capital expenditure number. As a result of that, the overall number will be just, as you can see, 10.9 FY26 revised estimate on 10.5. So growth of 4.2%. This is one area where their markets did not like it. Now within this, if you look at capital expenditure के अंदर भी, there is one line item that is defense expense where government has not done any compromise. So defense expense as a percentage of total capital expenditure number, which dipped in FY25, has increased to 18 percentage of the total capital expenditure, and in ये साल के बजट में वो ये रेशियो और बढ़ के 19% हो गया। मतलब जितना हम कैपेक्स कर रहे हैं उसका 19% एलिमेंट डिफेंस के पीछे स्पेंड हो रहा है। सो लास्ट ईयर भी डिस्पाइट ऑफ 4.2% म्यूटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर, दैट इज FY26 रिवाइज एस्टिमेट, उसके अंदर भी डिफेंस का ग्रोथ अच्छा आया है। Now, this is one area where we would like to watch it carefully कि आपने जो बजटेड एस्टिमेट किया है उसके आपने जो रिवाइज स्पेंड किया है वो कितना है। सो बेसिकली FY23 में जो कैपेक्स का अलोकेशन था उसके सामने स्पेंडिंग 3% कम हुआ, 24 में 5% कम हुआ, 25 में हाईएस्ट 8% कम हुआ, और लास्ट ईयर उन्होंने 2% कम स्पेंड किया।
Despite of that fact, if you look at the capex spent divided by number of months, that is 12 months. So monthली जो capex का नंबर है वो कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। मतलब 0.61 FY23 का रन रेट था मंथली, जो बढ़ के 0.79 हुआ, फिर 0.88 हुआ, फिर 0.91 हुआ, और ये साल का वो नंबर 1.02 कैलकुलेशन में आ रहा है। सो दिस इज वन गुड एरिया। नाउ इफ यू लुक एट लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसा कि मैंने बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन जो FY23 में 82% था, मतलब टोटल एक्सपेंस का 82% एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस में जाता था, जो बेसिकली इंटरेस्ट, वेलफेयर, सब्सिडीज एंड व्हाट नॉट में जाता है, वो नंबर रिड्यूस होकर अभी 77% पे आ गया है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पाई है वो 18% था, वो बढ़ के 23% पे आ रहा है, विच इज वेयर डायरेक्शनली वी आर गोइंग करेक्ट। एंड दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कीप मॉनिटरिंग इन एवरी बजट। एंड इसका दूसरा वे है कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सो आइडियली ये रेशियो और बढ़ना चाहिए, बट वी हिट द इंटरमीडिएट पीक एट 3.2% इन FY24। वहां से ये भले एब्सोल्यूट नंबर में आपका बढ़ता जा रहा है रेशियो वाइज, बट एज अ साइज ऑफ जीडीपी इट इज स्टिल क्लोज टू 3.11, विच हैज नॉट क्रॉस दैट 3.2 नंबर। सो जो FY20 के आजू बाजू 1.1% के आजू बाजू था, तो वहां से बढ़ के वी हिट द हाई ऑफ 3.2, एंड नाउ वी आर क्लोज टू 3.11। So ideally, capital expenditure should be growing faster than nominal GDP growth rate to inch up this number. And secondly, within the capital expenditure, the expense towards productive and towards high impact sector should be pretty much there. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, हमारा जो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस का जो नंबर आया, तो हमारी फिजिकल डेफिसिट ये साल इंप्रूव होके 4.3% ऑफ द जीडीपी होगी। नाउ यू नो, ऑप्टिकली इफ यू सी दिस ग्राफ इज गोइंग डाउन, बट द स्टिफनेस ऑफ द फॉल हैज रिड्यूस। सो फ्रॉम पोस्ट कोविड हमारा ये नंबर 7-8% पे था, वहां से रिड्यूस होके FY23 में 6.5 हुआ, वहां से 5.5, अ बिग फॉल ऑफ 100 बेसिस पॉइंट, 5.5 से 4.8। सो अगेन आपका 80 बिप्स का फॉल हुआ, 4.8 से 4.4, 40 बिप्स का फॉल हुआ, और अभी ये साल सिर्फ 10 बिप्स का फॉल हुआ है। सो बेसिकली आई लाइक दिस बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट आफ्टर फिजिकल consolidation at the cost of or at the expense of growth moderation, because they have to keep a very fine balance between, या मुझे स्पेंड भी करना है और मुझे डेफिसिट भी कंट्रोल करनी है। क्योंकि जैसे ही आपकी फिजिकल डेफिसिट डेविएट होती है, बढ़ती है, तो राइट साइड में आपको ग्राफ देखने को मिल सकता है कि ग्रॉस बोरोइंग जो गवर्नमेंट की, जो आगे 14.5, 15, 14, 16, 14.5 थी, वो स्पाइक होके 17.2 पे पहुंची ये साल। सो बेसिकली जैसे ही आपकी डेफिसिट बढ़ती है, या तो डेफिसिट कम होने का पेस मॉडरेट होता है, आपका बोरोइंग बढ़ता है, बिकॉज आपको डेफिसिट को मैच करने के लिए बोरोइंग करना पड़ेगा। एंड बोरोइंग का नंबर जैसे ही बढ़ता है, उसका इफेक्ट ये होता है कि आप एज अ गवर्नमेंट मार्केट से, सिस्टम से लिक्विडिटी सक करोगे, आप बोरोइंग करोगे। सो बेसिकली क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा, तो प्राइवेट प्लेयर्स को जो पैसा चाहिए अपना ग्रोथ करने के लिए, वो थोड़ा कम मिलेगा। तो ओवरऑल सिस्टम में लिक्विडिटी कम होगी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो कल से लेके आज तक 10 ईयर जीसेक 7 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया, विच इज अ बिग स्पाइक। सो बॉन्ड मार्केट रिएक्टेड नेगेटिवली। एंड इफ यू ऑल नो, मैंने वेरियस पॉइंट्स पे ये कम्युनिकेट किया था, चाहे हम वेबिनार में मिले हो या पर्सनली, दैट वी हैव हिट द इंटरेस्ट रेट साइकिल बॉटम। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से अभी हमारा 10 ईयर जीसेक जो प्रीवियस लो था उसके नीचे जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रारी, ग्रेजुअली our interest cost will increase, inflation is going to come back, and the bond market is signaling the same thing, and even government borrowing number has further supported that. Now, subsidies are more or less static. There is, so government is very clear that we don't want to give, any subsidy beyond a point. It has more or less, it is under control. Though there are few areas and pockets where they need to work hard, but as of now, it looks pretty much under control. So this is how your overall revenue expenditure and expenditure split looks like.
So if you look at the income tax, uh, corporate tax, GST, every number. So the corporate tax account for 24% of the overall total receipt. Income tax, as I said, is highest 29%. GST is 20%. Custom duty, excise are 57%. Likewise, non-tax revenue is just 13%. Similarly, on the expenses front, the highest expenses गवर्नमेंट बोरो करती है इन फिजिकल डेफिसिट को मैच करने के लिए, तो बिगेस्ट एक्सपेंस इज इंटरेस्ट पेमेंट टुवर्ड्स बोरोइंग, चाहे वो डायरेक्ट बोरोइंग हो या तो फिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स के थ्रू बोरोइंग हो. So interest is a quarter of the expense, which is ideally not the right thing. But we are growing nation. We need to keep spending, and our income is still coming with a lag effect. So I think this number is still pretty decent. डिफेंस का स्पेंडिंग अराउंड 11% ऑफ द टोटल स्पेंड है. Another part is subsidies. This is where the government has kept a check, and this number is not growing faster than the overall expense number. So the contribution within the pie is reducing or shrinking every year. Health and education expenses are just 2 and 3% of the GDP, which is where I really want government to slightly, ramp it up and focus on these aspects, because these are the softer aspects, need of the hour for longevity of our economic expansion and growth. Your transport is another large item, 11%. Agricultural is 3% likewise, So the major expenses and income split is there in front of you to look at. There are other areas, smaller things, like Biopharma Shakti, 10,000 crore allocation. It's a small number actually, because this is over the period of 5 years, and the current year allocation is just FY27 allocation is just 500 crore, which is peanut. But still, at least government has recognized the significance of biologics and biosimilars, which are a need of the hour to treat the chronic disease like diabetes and all. India's semiconductor mission, government has spelled out a mission 2.0, and I'm sure they are after that to have locally manufactured chips and wafers. Electronics component, this is the area where a lot of efforts and government put in so many schemes and projects and efforts, and which led to substantial increase in electronics manufacturing and exports. And they have significantly ramped up the allocation from 22,900 crore, 919 crore to 40,000 crore. However, the PLI scheme, production link incentive scheme from mobile devices and other, has not been continued. This is where slightly negativity came in for certain stocks, but more or less the allocation itself is more than almost doubling. So this is a good thing. Fourth is rare earth magnet, because again, India does have these rare earth magnets. Only thing is that we have to really work hard to figure it out and mine it. Your country's core competitiveness defines and relies upon this minerals ownership. So I think it's in the right direction. Chemical parks, capital goods related, softer aspects, textile, all these things are few of the touch points. These are like, long-term benefits, nothing to fructify in a very short period of, this budget to next budget. So market may not immediately like it and discount it, because a lot has to happen in numbers. So another good thing which we liked was for the IT sector, this safe harbor things and margins. So basically, what used to happen that it is related to transfer pricing. So if I'm an IT company and I have a couple of subsidiaries in the different countries and different segments, and if I have to do the business interconnectively, then there was a threshold of just 300 crore. So 300 करोड़ के ऊपर अगर मेरा बिजनेस हो जाता था तो मुझे सारे कंप्लायंस करने पड़ते थे, अप्रूवल्स लेने पड़ते थे, उसमें बहुत टाइम लगता था. सो बेसिकली जितने भी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं, इवन जो जैसे मैं सीमेंस हूँ या फिर मैं कमिंस हूँ, और उसने यहाँ पे एक उसके ऑल ओवर वर्ल्ड के
बैक ऑफिस रिक्वायरमेंट के लिए जीसीसी ओपन किया है, और उसका भी इंटरकनेक्टेड कोई बिजनेस है, तो 300 करोड़ इज अ स्मॉल नंबर विच दे हैव इंक्रीज इट टू 2000 करोड़. एंड आई थिंक दिस इज through automatic route for 5 years at least once you apply for it and get the approval. सो इन शॉर्ट, मैं आपको बजट का मेरा सिंपल समरी बताता हूँ. ये बजट फोकस करता है ग्रोथ पे विथ क्वालिटी एक्सपेंडिचर्स. यू नो, इन एरियाज लाइक डिफेंस, रेलवे. जैसे डिफेंस में ये साल अराउंड, मेरे हिसाब से जो नंबर्स हमने देखा था, बिट ऑन द रिवाइज एस्टिमेट बेसिस पे 20-22% का अलोकेशन ग्रोथ है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर. रोड्स पे 8% का ग्रोथ है, रेलवे में 10% का ग्रोथ है. तो एक क्वालिटी एक्सपेंडिचर पे फोकस किया है, नंबर वन. नंबर टू, एक फिस्कल सपोर्ट दिया है. जो डेटा सेंटर में 2047 तक का टैक्स इंसेंटिव है, फॉर एग्जांपल 20 साल का. तो पहले वो इंफ्रा प्लेयर्स को था कि जैसे अगर आप लोधा हो या फिर आप अनंतराज हो और आपने डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया, तो आपको टैक्स इंसेंटिव था. वो तो अभी मिल गया था एफ आई, मतलब 2025-26 में. लेकिन ये जो क्लाउड कंपनीज है, जो हाइपर स्केलर्स है, और उनका जो कैपेक्स होता है, बिकॉज दे आर द मेन स्पेंडर, तो उनको 2047 तक ये टैक्स फ्री हो जाएगा. इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे, एक डेटा सेंटर जो आता है, उसके पीछे करोड़ों रुपए का खर्चा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल 1 गीगावाट डेटा सेंटर के पीछे 28 से 30 बिलियन डॉलर रुपीस का खर्चा होता है. और उसमें द लार्जर पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस टूवर्ड्स आईटी इंफ्रा, वायर्स, केबल्स, cooling systems, HVAC systems, other things. And you really generate a lot of employment for that. So plus it is a pivotal point for the AI. So government का जो focus है वो data center and AI पे through fiscal support is pretty good. इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने जैसे बताया कि 22,000 करोड़ वाला 40,000 करोड़ का अलोकेशन हुआ है, विच इज़ वेरी गुड. However, there is a slightly higher fiscal deficit, 4.3%, which market was expecting close to 4.2. उसकी वजह से गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ी है, which is otherwise मेरे हिसाब से holistically it is pro growth and which is positive for me. सो ओवरऑल ब्रॉड एजम्पशन ऑल्सो ये बजट के, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ एग्रेसिव एजम्पशन लिए है कि रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा पकड़ा है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा पकड़ा है, एक्सपेंसेस को अंडर एस्टिमेट किए हैं. सो मोटा मोटी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो हमारे आईब्रोज रेस करे और उसको डेविएशन बढ़ा है. सो दिस सिम्स प्रिटी रिजनेबल. एंड मेरे हिसाब से ऑन द कॉन्ट्ररी दे कैन ओवरशूट देयर ओन एस्टिमेट्स. सो दिस इज व्हाट इज द समरी ऑफ द बजट. मार्केट का जो रिएक्शन था वो एसटीटी वाला और वो कैपेक्स का था, थोड़ा कम स्पेंड किया. अभी एसटीटी इज, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दे हैव डन, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शंस. एनीवेज मैं जोकिंगली ये बोलता हूँ कि ये गवर्नमेंट हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों पे काम कर रही है. हेल्थ इसलिए क्योंकि सिगरेट पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, जो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. एंड वेल्थ इसलिए है कि एफ एंड ओ, विच इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे लोग बोलते हैं 10 में से 9 लोग पैसा गवाते हैं, मुझे तो लगता है 9.9 लोग पैसा गवाते हैं. आई थिंक 0.1% लोग ही कमाते हैं. सो वहाँ पे स्पेक्यूलेशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने एस टी टी बढ़ाया. दैट्स व्हाट दे क्लेम. However, there are different school of thoughts that अगर आपको genuinely स्पेकुलेशन को डिस्करेज करना है, तो यू शुड क्लोज वीकली एक्सपायरी, विच इज एक वीक के लिए कौन हेज करता है आइडियली. सो अगर आपको हेज ही करना है तो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन में करोगे ना. आई हैव नेवर सीन एनी फंड मैनेजर डूइंग हेजिंग फॉर अ वीक. सो दैट कॉज फॉर अ वेरी हाई स्पेकुलेशन. सो आप उसको कम कर सकते थे, या तो फिर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में एसटीटी बढ़ा के सामने कैश मार्केट में एसटीटी कम करना था टू प्रमोट द जेन्यून इन्वेस्टमेंट. एनीवेज, these are all debatable things, nevertheless, but we have to live with that. And this is what the market outlook is, जो हमने लास्ट कॉल में भी डिस्कस किया था. बेस इज वेरी फेवरेबल फॉर लास्ट मैनी क्वार्टर्स. अर्निंग्स आर लाइकली टू रिकवर बिकॉज जो पास्ट बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, इनकम टैक्स में 12 लाख की लिमिट लास्ट बजट में,
जो टैक्स फ्री है, और जीएसटी इतना काफी आइटम्स में जोर से कटा है, प्लस गुड मॉनसून्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकली 8 पे कमीशन, एंड ऑल्सो बिनाइन इंटरेस्ट रेट जिसका बेनिफिट ट्रांसमिशन हुआ है धीरे धीरे। तो आई थिंक वो सब की इफेक्ट से अर्निंग ग्रोथ रिकवरी इज प्रिटी मच डुएबल। ये क्वार्टर में वो जो लेबर कोड की वजह से थोड़ा सा सबका वन टाइम प्रोविजन आया है, अदरवाइज द अर्निंग ग्रोथ वुड हैव बीन इवन बेटर। सो मेरे हिसाब से वी हैव हिट द बॉटम ऑफ द अर्निंग ग्रोथ साइकिल एंड वी आर लाइकली टू सी द रिकवरी अपवर्ड्स। So, based upon the FY27 numbers, 23,000 on the downside and 28,160 on the upside is there. But another 6 month down the line, market would start discounting FY28 number. तो उसके बेसिस पे अराउंड 24,400 का डाउनसाइड एंड 30,000 के 29,500 के आजू बाजू का अपसाइड ओपन होता है। सो दैट इज वाई आई ऑलवेज से दैट आई डोंट सी मार्केट सस्टेनिंग below 24,800, 24,400, and market has respected those levels couple of times in last couple of days. And as a result of that, we are very fairly confident that this is the time to actually participate into the market, deploy your capital. Don't look at the screen. Of course, the screen is pretty painful for most of the investors. पिछले अप्रैल 7 अप्रैल 2025 को जब 21,800 की निफ्टी इंट्राडे टच हुई, वहां से 26,000 के ऊपर जाके अगेन वी आर बैक टू 25,000 लेवल्स। और वो जो जर्नी में ऑलमोस्ट काफी स्टॉक्स गिरे हैं। हाँ, जितने इन्वेस्टर्स से हम बात करते हैं वो डायरेक्ट पोर्टफोलियो में दे आर ब्लीडिंग। Even the professional returns are pretty muted. Of course, our returns are very good across the products. We have been successfully beating the benchmark with a reasonably very good margin. So, leaving us apart, whatever we see, there is a lot of pain in the system. मेरा एक ही सजेशन है, जब एक्सट्रीम पेसिमिज्म होता है, जब आप गवर्नमेंट को ब्लेम करना चालू करते हो, आप सिस्टम को ब्लेम करना चालू करते हो, आप इंटरनेशनल को ब्लेम करते हो, और आजू बाजू के सब लोग पैनिक में और पेन में होते हैं, एंड जब हमारे जैसे जो I would not say proudly that सेवी, but yeah, with humility I would say that हमारे जैसे जो सेवी इन्वेस्टर्स है वो आपको हिंट दे रहे हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू बॉटम, देन यू हैव टू प्रोबेबली लिसन टू दिस पार्ट मोर देन द chaos एंड द नॉइस आउटसाइड। एंड अभी दूसरा ये भी रीज़न है कि पिछले 1.5-2 साल से एमटीएफ बुक में बोरोइंग करके लोगों ने बहुत पोजीशन स्मॉल एंड मिड कैप में बनाई थी, वहां पे कुछ पैसा बना नहीं, ऊपर से इंटरेस्ट भर के थक गए, तो वो भी लिक्विडेशन का टाइम चल रहा है। मार्च आते आते वो और इंटेंसिफाई होगा बिकॉज ऑल द बुक्स विल बी मोर और लेस क्लोज्ड। सो मुझे लगता है कि अंटिल मार्च यू विल गेट excellent opportunity to cherry pick the quality stocks, excellent opportunity to time the entry, again. And uh, post that, probably 15-16 March onwards, things would start turning around seriously. That's generally the usually phenomena every year. And थोड़ा जो कमोडिटीज में जो ऑफलेट जो गिरावट आई है शार्प गोल्ड एंड सिल्वर में, और उसमें भी मेरा ऐसा मानना है कि काफी इन्वेस्टर्स स्पेक्युलेटर्स बन गए थे, ट्रेडर्स बन गए थे, और ऊपर में काफी एक्सपोजर आया है, तो उसके भी मार्जिन हिट आया है, जिसका अल्टीमेटली खामियाजा इक्विटी के माल को बेच के ही भुगतना पड़ा है। सो दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स, वी ऑल हैव गॉन थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स। As a savvy investor and smart investor with a deep pocket, you have to capitalize this and grab the opportunity and invest for medium to long term. Yeah, so that summarize our thing. One calculation I just wanted to show on the buybacks front. So पहले हमारा जो ये इलस्ट्रेशन है कि अगर 8 लाख रुपए का बायबैक होता है और एज ए इंडिविजुअल आपकी परचेस कॉस्ट कॉस्ट 5 लाख रुपए की थी, तो पहले आप एज्यूमिंग कि आप 30% स्लैब में आते थे, तो आपका जो टैक्स पेएबल अमाउंट था वो 2,49,600 था। नाउ इफ यू क्वालिफाई अंडर एलटीसीजी, एंड अगर आपने 1.25 लाख का एग्जाम्शन एग्जॉस्ट कर लिया है कैपिटल गेन का, तो आप सिर्फ और सिर्फ 21,875 रुपीज का टैक्स पे करोगे।
एंड अगर आप एस टी सी जी में आते हो तो आप 60,000 का टैक्स पे करोगे. सो देर इज गोइंग टू बी सब्सटेंशियल टैक्स सेविंग फॉर बाईबैक्स. एंड इवन फॉर प्रमोटर्स दिस नंबर इज इंडिविजुअल इन्वेस्टर जितना ल्यूक्रेटिव नहीं है, बट देर ऑल्सो दे आर गोइंग टू सेव from earlier 25% tax to 22% tax for the case of promoters. So I think there is going to be incrementally more and more buybacks in a coming financial year to take the advantage of this tax opportunity. Yeah, so that's all from my side, and we can start the Q&A session. Anyone who has a question can type in the Q&A section, and I will try my best to give you a candid answer. So there's a question that where does the government employee related expenses, salary, pension included in total expenditure? I just answered in my presentation that it is part of the revenue expenditure, which is part of the total expenditure. Why tax relief for 21 years in data center? Otherwise, it is not happening for any other sectors. First of all, data center is relatively sunrise sector. India has just started catching up in the global race. पूरे यूएस का जो अभी ग्रोथ आप देख रहे हो जीडीपी का, उसमें 70-80% ग्रोथ कंट्रीब्यूशन इज प्योरली थ्रू एआई कैपेक्स. उसका भी लार्ज पार्ट इज टूवर्ड्स डेटा सेंटर. We use AI tools. AI requires a lot of bandwidth, IT infra. Ultimately, you need huge capex for that. And data center capex is good for India because we have got ample renewable power, we have got decent land availability, and we have got a reasonably cheaper labor, and we are relatively cost competitive for the components required for that. So our cost of setting up the data center is relatively lesser. And if you give a tax incentive, you would have a huge capex coming up in the data center space, which is all the way a new sector to bring in foreign capital, which we need. So ये आपका क्वेश्चन का आंसर था. Can you please give your outlook for gold and silver? It has been suggested at this price and companies like Hindustan Zinc and other metal related companies. Okay. Uh, has been suggested at this price. So, see, gold and silver, we were very vocal. We suggested long ago, not at this price. And, since then, there has been a substantial growth in the value of gold and silver. There has been a very decent correction from the top, but the top itself was far, far, far stretched, too fast to digest. And my sense is that this is likely to consolidate now. Maybe 1,75,000 to 2,000, 2 lakh is a level for silver to make a medium term bottom, or $65 to $70 in terms of dollar is a decent area. And Comfort incrementally is more in gold than silver, because gold is a classic case of hedge against de-dollarization, or global inflation, which is likely to hit all of us. And obviously Hindustan Zinc being a globally fourth largest silver producer, uh, fortunes are relatively linked to zinc and silver both. So they would be moving in tandem with silver movement. So higher the silver prices, higher would be the stock prices, and vice versa. So incremental volatility is likely to be much higher. But our structural and fundamental view, instead of commenting on a particular stock, I would say that we are quite convinced about the global inflation through metals and commodities sustaining. And any meaningful correction, we would be very happy to absorb it, with a long-term positive outlook. Um, so
is more or less the answer to your question. What is the support for gold and silver? I just mentioned about it. Gold looks much safer compared to silver in terms of volatility and stability point of view. What does the budget mean for sectoral performance? IT and infrastructure. Also, can India attract foreign capital after this budget? So, foreign capital attraction is not possible after this budget, because foreign capital attraction जो होना होता था, तो अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, उसमें नहीं हुआ है. So, one of the major area where foreign capital would be keenly observing Indian market and they would probably come in is a trade deal with United States of America, because they view US India relationship very carefully, and any sign and any concrete outcome would remove the concern, and they would be probably coming in after that. That's a first signal. Second is, if there is a meaningful earnings revival, because there has been a pretty muted earning growth for the last many quarters, and if there is a meaningful earning revival, then they would come back accordingly. And third is, if there is a substantial weakness in dollar, and if they are done with, let's say, other emerging markets, for example, South Korea did very well last calendar year, and even in this calendar year, in January, they did very well. But today I heard that there was a lower freeze of 4% for the index. So basically, if they are done with other emerging markets, and if they find relative India market attractive, then they might come back. So it's a function of macros and earnings, and nothing to do with budget anymore. That's what the answer. This budget is good for IT sector through the facts and we mentioned. Of course, it is good for infra, capital goods, engineering in a selective way. The major beneficiary, of course, looks like defense out of the pack. Which long-term investment themes look most attractive post-budget? Manufacturing, capex, green energy, or consumption? A very interesting question. See, consumption is something which is overdue to revive, because government knows it very well that the private final consumption number is around 658 to 60% of the GDP. So if they don't revive consumption, then alone capex cannot move the needle. So they have tried that by way of tax rationalization, direct and indirect. तो यहाँ से consumption is forming a clear base, and it can gradually improve. Uh, capex is going to be very very niche and very very selective. All across the board, जो सब कुछ चलता था वैसा मार्केट नहीं चलेगा, वैसा कैपेक्स थीम भी नहीं चलेगा. As I said, the defense looks promising because there is a clear cut allocation and spending intensity both visible. Power is another pocket where within the capex, the things may look interesting because of if the data center incentives are attractive enough for global hyperscalers to come and set up the data center, then you would have a sizable power ancillaries requirement kicking in. So this is good for long term. So these are the two areas where this budget particularly has drawn attention. Otherwise, we are, if you ask from the house perspective, we are positive on uh, CDMO within the pharma. Other pharma part is also gradually becoming attractive. IT is clearly bottoming out. It looks like metal, where we picked up early, we are convinced. Yeah, cement is something which we really like, has been doing decent, and consumption with auto. Uh, these are the few pockets and areas, and defense, of course, where we think that long-term appreciation is possible. Do you foresee AI bubble and impact on Indian market? Of course, if there is a AI bubble, AI is a very large part of the US market growth, and if that bubble bursts,
then there will be impact on all over the world. Near term negative, but long term positive, because then the capital will move out of the AI stock to the non AI stocks, and India would be immensely benefiting, because India has paid a lot of price. As one of the reason FIs have not invested in India is that they have focused a lot on the AI related, or hard commodity related countries like Brazil or Taiwan or South Korea, so and so forth. So I think it would be other way around in the case of India if AI bubble burst. But we need to see when and how. As of now, we have to just live with it. What will be the market impact on European trade deal? Market impact तो हो चुका है. Market generally, do not give a clear immediate verdict for this kind of trade deals. Of course, it has to come into paper on paper, and then start reflecting in the numbers, and the companies start talking about it. For example, I'm a textile company, and I would articulate in a conference call कि yes, I have been benefited because of the European FTA. My exports to Europe was these, now it is that. So, that excites people. And when the corporate starts testifying that, then only market would take it with a delayed response. That's what the answer is. Any idea why FIs are selling so much in India? I just answered that. I hope you got the clarity for that. If STT action was good, then why market was down? So why market is up today then? So that is the answer to your question. So it was a short-term reaction. Market was down mainly because of no substantial positive reforms to attract the foreign investors and FII. Market was down because there was a poor allocation for the capital expenditure for budgeted versus revised estimate of FY26. So these were the two major reason according to me. Otherwise, there is no major reason for market to go down yesterday. What would be the effect of budget on power, energy and telecom sector? So power and energy I just mentioned. Telecom, there is nothing much in the budget, but the sector itself is going through a decent compounding, and it's a relatively oligopoly play. So there is nothing much happening in the sector from the policy perspective. Uh, there is a particular question about our top holding in the pharma. I would generally refrain for talking about stock specific, but the answer lies in the natural increase in the weight thanks to the capital appreciation of the stock price. Secondly, if you look at the numbers have been far, far, far better than whatever the best possible street estimate was and is. So I think the company is delivering. It's walking the talk, and I think it's a conviction bet for us. Uh, you talked about recent underperformance for that counter, so we shouldn't be very greedy in terms of asking a consistent outperformance from our top bets, because if they've done well for a fairly good time, they have a right to go for a consolidation and then prepared for the next up move. Of course, we have to keep monitoring the quarterly numbers, keep monitoring the developments, and keep checking the risk factors every day passing by. And if everything is right, there is no harm holding it, even if there is a short-term underperformance, because the longer-term outlook, if looks pretty robust, then there is no need to restructure it. What's the view on base metal? Any correlation with China? Yes, there is a strong correlation with China. So I just explained to you all in a last webinar recently that
China is moving towards the financial economy from real economy. They are focusing on value creation and better realization per piece and improving profitability because their population is declining, their fertility rate is reducing, and there is no incentive for them to go for a large volume growth to absorb the employment because anyways it is done in last 20 30 years. So that itself is a triggering point for commodity inflation kicking in. On other way around, the counterpart US, which was a financial economy, is moving towards a real economy. In a way, it is moving towards heavy capex. It is probably going to cut down on buybacks and dividend, and which in turn will be positive for the metals. And also, devaluation of the dollar because of the heavy debt is also in favor of base metal and overall commodities, not just base metal, but overall commodities. What is the defense personal expenditure of the total defense expenditure? That number. So basically defense expenditure के अंदर में defense capex का जो प्योर जो capital expenditure within that is around 35 to 40%. So 55 to 60% goes towards defense, not just personal expenditure or pension and all, but also for R&D and other projects as well. So that bifurcation we do not have, but that's usually the ratio which we have been seeing over the years. Yes, you are right. Don't you think 2% on health is less, which is giving more employment? They actually talked about this in this time's budget, and मेरे हिसाब से हेल्थ केयर हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल इन कंट्री लाइक इंडिया. आज हम यंग है, और मीडियन एज इज 30, बट बाई 2050 हर पांच में से एक बंदा सीनियर सिटीजन होगा. सो हेल्थ केयर इज अ वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर. इन नेक्स्ट 25 years entire demographic fabric is going to change substantially. Plus medical tourism itself is a huge potential area. So I think government spending is less, but private side is doing pretty decent. But yes, you are right, 2% is less. What are your views on a Q3 earnings? Sectorial earning revival is possible or visible throughout, or it is still a very selective, limited sectors and the companies. If you look at the last 9 10 months, only metal, BFSI, and auto has been a clear winner in terms of uh, growth and all. So a very cherry picking market is going through a very narrow patch of selective winners, and I think this phenomena is going to continue in a coming months and years as well. Your comment on GST changes and IT slab change that happened few months back. Otherwise, what that could have been part of the budget. Yes, of course, that could have been part of the budget, but government wanted to expedite it and never wanted to wait for that because, anyways, IT slab changes happened in last budget itself, and GST happened in between. What will be the impact on pharma and healthcare considering change in medicine prices and also a plan of developing medical tourism? So basically, medicine prices, they have decided to reduce the import duty for few of the life-saving drugs, which is good for the country. But our pharma industry thrives on both domestic as well as international market. And secondly, medical tourism is good for healthcare, especially hospitals. That area has a huge potential because the cost overseas is pretty high, and B, the time required to get treated is also pretty long. So there is a lot of, if you are not well covered through insurance, then you are gone. So I think
We are gradually putting up our efforts on a global scale, and I'm very very hopeful about medical tourism picking up, and also healthcare. As I just mentioned, that 25 years down the line, every one in every fifth person would be senior citizen, which would be who would be needing a medical assistance. What is your suggestion for a small investor who does not have a 50 lakh portfolio? Sir, we do have a 10 lakh rupees product under registered investment advisory. There is a separate team for that, and our you can get in touch with our RM, or back office or whosoever, and they would be able to guide you about those products. How is the performance of business cycle fund and all weather compared to market? We discussed it in a very recent webinar, but for your reference, for the current 9 months of the current financial year, business cycle is at par to the benchmark, which is uh, still very decent compared to the pain in the market. And all weather is far far better. It is probably 8% plus alpha, so basically 8% higher return than the market return. That is as on 31st December. Since it is a current month ongoing, and it's just a 1 month in between. So we have not published the detail, but I'm sure even if I want to talk about as on 31st January, we are in a significant alpha over market for all weather. Even for ICE and diversified, there is a very decent alpha, and BCF is at par to the market because it has a different thought process. It's a pure uh, thematic product in terms of cyclical turnaround, and aggressive towards mid and small cap, which is going through some pain. But nevertheless, fund is still at par to the market, which itself is a good thing in the current environment. Indian carbon market was about to roll out in FY 26. Any mention in budget about it? I'm sorry, sir. I'm actually not aware about it for this. What about the weakening rupee versus dollar? It is going to impact the market. I think market has already digested large part of it, and of course, as long as the rupee keeps on depreciating, the FIs keeps on waiting at the fences. So the day they realize that the rupee is fairly valued and probably undervalued, then they would probably try to jump in. So as of now, that's what. China market view. I think we are relatively constructive about China market. We think that uh, there is a potential for that market to keep doing well, which just started last year. Because the money is shifting from dollar to emerging market, and China has started focusing on return ratios and profitability. These two things are going well for the Chinese market. Do you follow momentum strategy or value or any combination in general? Because market is not undervalued nor overvalued, but getting swayed by geopolitics. So basically, I follow a very simple fundamental analysis, and value a lot of most of the time I value and respect the earnings and the underlying business revival. So we are generally in between. So we are neither into value nor into growth. We are in between. There is nothing much on the agricultural side, majorly, but the farm side, that Narega and other scheme allocation has increased. That's what is there in this budget. Ladies and gentlemen, any more questions? Please put it in a Q&A section.
Let me just go through once again if I have missed any questions or not. Yeah, so there is one question: with market showing a clear turnaround and risk appetite improving, we are keen to aggressively position fresh inflow to capture faster upside. Among all our themes, all weather, diversified business cycle, and ICE, which theme do you believe is best placed to move fast and generate superior return in the current and coming phase of the rally? Oh my God. So I really don't have answer because uh, markets are always supreme, but all weather and diversify has blend of a larger portion of the large cap. It's relatively defensive pocket versus business cycle and ice, which has more of a mid and small cap. So I would say that a combination of any one of two. So basically, one from all weather diversified and one from business cycle ice would be the ideal combination to take the leverage out of the upcoming up move. So anyone has further questions? Okay, there is any country where budget deficit is zero or less? No, sir. No country has a higher income than expense. Every country has higher expense than income. So in fact, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन. कोविड के बाद काफ़ी कंट्रीज की फिजिकल डेफिसिट जो बढ़ गई है वो बढ़ी हुई है. इंडिया हैज़ डन अ रिमार्केबल जॉब ऑफ ब्रिंगिंग इट डाउन फ्रॉम 7-8% टू 4.3%. I just answer for the China market view, so I don't think uh, China market view. I just mentioned that it's good because of the de-dollarization as well as China focusing on profitability and growth. So yeah, ladies and gentlemen, I think I have scanned through almost all the questions. Yeah, uh, and we are good to go. Abhay? Okay, so I think there are no more questions. So we conclude our session here. Thank you so much, everyone, and thank you, sir, for walking us through the budget highlight. And if you have any query, any question, feel free to reach out to us. Thank you. Thank you, everyone.